Dear all, a very good evening to all of you. I'm Srishti Kapoor on the behalf of Texo. Welcome all for our session Analysis of Union Budget 2023. In the journey of the last 1 year plus, Texo work as catalyst in the knowledge space of GST domain, as work as bridge of professionals, academies, industry, especially MSMEs and SMEs, students and government department with different initiative and unique product on GST. Thank you all of you for overwhelming response and we received more than 1800 registration. We are going to share recorded for today's session with the more than 2 lakh plus MSMEs and SMEs. Also recording for this program will be available on our YouTube channel Texo. Today we have with us our esteemed guest CA Dr. Girish Ahuja ji, direct tax expert, CA Atul Kumar Gupta ji, past president of ICAI and indirect tax expert, Mr. Brijesh Kumar Agarwal ji, co-founder of IndiaMart and CEO of Busy Business Accounting Software, and Professor SP Agarwal ji, professor in Delhi University and principal in Ramanujan College. I could now welcome income tax guru CA Dr. Girish Ahuja ji to share his view and analysis of Union Budget of 2023. Good afternoon to everyone. I'm extremely sorry for joining a little late, but nevertheless, let me tell you, this time budget is little different. I was folding my hand, and I was always crossing my fingers also at the same time, that they may not shift the entire from old regime to the new regime. I will tell you what is the new regime, that you may not get certain deductions or exemption, but you may have to pay tax at a little less rate in the slab phase. That was the case. They were bent upon saying that we will have only new regime and will not go for old regime. Under old regime, you are getting deduction under 80C, like 1,50,000, 80D premium per insurance premium. That also you were getting a reduction. You were getting reduction under 80 TTA, interest 10,000 or 80 TTB for senior citizen 50,000, or you were getting deduction under salary HRA exemption, LTC exemption, and you were getting deduction under 16. I'm not talking about business at this moment. Even in business, you were getting deduction under 35 section or 35 AD section or 35 AC section. So many sections were there. And you were getting deduction under entire chapter 6A. Now, what have they said? Try to understand. Earlier, if you wanted to opt for new regime, you had to apply for, or you have to make an option and apply for that in a prescribed form on or before the due date given under 139(1). You had to apply. Now, it is the other way around. If you do not apply, by default, if you do not apply for old scheme, by default, you will be in new regime. By default, you will be in a new regime, meaning thereby that if you want to remain or in the old scheme, old regime is where you were getting deductions, etc. If you want to remain in that, you will have to apply in a prescribed form on or before the due date mentioned under 139(1) that I want to opt for old scheme. If this application does not go, or you don't, you will be under the new regime by default. By default, number one. Number two, if your total income includes business income from business or profession also, then in that case, you have to apply first time also old scheme. And once you apply under old scheme, then you will remain in old scheme. You cannot shift to new scheme. But you can given one chance, lifetime one chance, and thereafter you will remain in new scheme. But for others who are total income do not include profit or gain from business and profession, if you want to go for old scheme, please, you have to apply every year. You have to apply every year. Suppose this time you apply that I want to be old scheme, and next time you don't apply, then you by default you will go to what you call new scheme. But you can keep on changing that if your total income does not include profit or gain from business and profession. But I'm warning you, a person like me has to be very careful, because beside deduction of 1,50,000 in provident fund, etc.,
ATC, I get 50,000 for Mediclaim, I get 50,000 for contribution to National Pension Scheme, I get 50,000 for ATTTB, and I also get 3 lakh rupees as an author, deduction under ATQQB. ये सब चला जाएगा. और अब तो अग्रवाल साहब ने हमें वो भी दिलवा दी है पेंशन, और पेंशन में भी जो मिलता था वो भी चला जाए. मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इन द न्यू रिजीम यू डोंट गेट एनी डिडक्शन. एक एडवांटेज दिया है सर पुरानी स्कीम से, सैलरीड पर्सन विल गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन. The entertainment allowance, professional protection, he will not get deduction. LTC, he will not get deduction. HRA, he will not get deduction. 1014, he will not get deduction. But one advantage given this time, that you will get deduction of 50,000 of standard deduction, which was hitherto not available if you opt for new scheme. But now, by default, you are in new scheme, 50,000 will be available. Even family pension also, but I don't want to tell family pension at this stage. This is the only advantage which is given. But there is a tax advantage also, sir. Tax advantage. One, if you are under a new scheme, if your total income does not exceed 7 lakh, you don't have to pay even 1 rupee as tax. Total exemption under 87A, if your total income does not exceed 7 lakh. मैं 7 लाख नहीं कहूंगा, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 750 भी कह सकता हूं, तो 50,000 वो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेगा और 7 लाख यहां ले लेगा. मेरी बात को समझे मैंने क्या कहा? 7 लाख तक फुल एग्जेम्पशन है, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी ना. एलटीसी नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी, वो आपको मिलेगा. लेकिन इफ यू आर ऑल्सो हैविंग लोन फॉर योर ओन हाउस, interest paid, kindly note, you will not get that deduction of 2 lakh if you are going for new scheme. That 2 lakh was allowed only under the old scheme. So you will have to work out. You will have to work out which is better. But you have to be careful that if you want to go for old scheme, you will have to apply now. You will have to make an application. You have to opt for it. अब सुनिए स्लैब क्या है. पहला स्लैब था ऑन फर्स्ट 2,50,000 nil, और नेक्स्ट 2,50,000 5%, on next 2,50,000 10%, on next 2,50,000 15%, on next 2,00,000 20%, on next 2,50,000 25%, on the balance 30%. मतलब हर स्लैब 250 के ऊपर 5% बढ़ता था, और पहला 2.5 लाख माफ था. यही था सर. और अबव 15 लाख 30% ही था. अब इन्होंने that was whether you are a senior citizen or you are a resident or you are a non-resident, doesn't make any difference. Exemption was 2,50,000 in new scheme. Now in new regime, the exemption shall be 3 lakh, and next slab will be also 3 lakh. So up to 3 lakh nil, next 3 lakh 5%, next 3 lakh 10%, next 3 lakh 15%, next 3 lakh 20%, next रुक गया मैं, क्योंकि अब 25% वाला स्लैब नहीं है, ऑलरेडी 15 कंप्लीट हो गए, अब 15 30%. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अर्लियर एक स्लैब और होता था 1250 to 5 lakh and 15 lakh 25%. Now 1250 to 15 is already merged in 3 lakh, 3 into 5 15. So therefore 25 is gone. Now it is 5 10 15 20, either 3 to 6 5, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 15 10 12 to 15 20, and above 15 30. Clear है sir? Clear है sir? Next point. मेरी नहीं है इतनी रिटर्न, मैं सोचता भगवान करता है मेरी भी इतनी होती. The maximum, the surcharge which was there, maximum surcharge rate was 37%, provided your total income exceeds rupees 5 crore. Now, if I opt for new scheme, the surcharge will be 25% maximum, but that is above 5 crore. अब मुझे फायदा नहीं हुआ, मेरी इनकम इतनी नहीं है सर. मैं सोचा भगवान करे 5 करोड़ से ऊपर होता तो 25% मैं भी देता. मेरी तो 25% वैसे नीचे आती है, 25 ही आती है, 25-35 तो आएगी नहीं. चलिए, लेट अस कम बैक टू द अनदर पॉइंट. ऑलरेडी बेनिफिट, यू नो दैट
that under 111A capital gain, 112 capital gain, 112 capital gain, and dividend income, they have already restricted whether you are an old scheme or a new scheme. The surcharge cannot exceed 15%. वो तो already किया हुआ है for 111A short-term capital gain, 112 any long-term capital gain, 112A, 112A वो लिया हुआ है, and even for dividend, the surcharge maximum is 15%, whether you are under new scheme or you are under old scheme. But under new scheme now, the surcharge maximum will be 25% instead of 37%. Clear, sir? So this is 115 BAC, which I wanted to tell you. This is most important for everyone. Another one more feature in 115 BAC. Earlier 115 BAC was applicable, Agarwal Sahab, only for individual or HUF. Now it is applicable not only for individual HUF but also for association of persons other than cooperative society or body of individual, whether incorporated or not, or any artificial juridical person. So all categories except firm and company. All categories except firm and company now covered under new regime under 115 BAC and cooperative society also. That is because that is already there under 115 BAD may. So my point is either you are individual or you are HUF, you are AOP other than cooperative society, you are a body of individual, whether incorporated or not, you are an artificial juridical person, you are under new scheme. If you want to go to old scheme, kindly make an application that I wish to opt for old scheme, and then only you will be eligible for old scheme. Clear, sir? This is, I wanted to tell you one thing. Now coming to the next point. Our professionals and small, medium industries, very small and medium industries, that they have to make pay. There is a Small Medium Industry Act where section 15 says you have to make the payment within 45 days if there is an agreement, and if there is no agreement, you have to make a payment within 15 days. Well, that wasn't required, but income tax never disallowed that expense, even if the payment was made, delayed payment was done. Now section 43B has been inserted, a clause has been inserted in section 43B that as on 31st March, if you see that there is a payment which is outstanding beyond a particular date, kaun si date thi? 45 days if there is an agreement, maximum 45 days if there is an agreement. Otherwise, you have to make the payment for small and medium enterprise within 15 days. If there is no agreement, within 15 days. Now the question is, if it is due on 31st March, please note, you will not be allowed deduction on account of that expense. So, अब हमारे professionals हैं, President साहब, अतुल जी, मैंने नाम लेना शुरू में छोड़ दिया, इसलिए मैं कहूँगा हमारे पास president और बड़े beloved मेरे हैं, तो आप professional अगर अपने आप को register करा लेते हैं, they are eligible to get themselves registered. They are sure to get the payment maximum in 45 days, otherwise in 15 days. And you don't have to tell them you will not get a deduction this year if you don't make the payment. So gradually, I think something will improve. Payment will start coming to the professionals also, which was delayed, particularly for chartered accountant, because they were very dear friends and family members. Chartered are considered family members of the client. और वो देते थे, दे देंगे आपको, तो आप तो घर के आदमी हैं. So that part of thing is also beneficial to us. Another point, capital gain. So far, if you sell a house and buy a new house within a certain period, you are getting exemption of the capital gain invested in the purchase or construction of a new house property. You sell one house, residential house, buy another residential house within 1 year, 1 year before or 2 years after, or in the construction within 3 years after, whatever amount of capital gain was invested, you are getting deduction on account of that. But now this limit, there is a limit now. The exemption under section 54 for buying a new house or construction new house will be limited to 10 crore.
So the rich people who were selling, having a capital gain on the sale of a residential property, let's say 30 crore, invest 30 crore in the another residential house, you are getting the full exemption of 30 crore. Now exemption will be limited to 10 crore. Similarly, there is a 54F section. You could sell anything except residential house property and invest the entire sale proceed in the purchase of a residential house or a construction of a residential house. You were getting exemption to the extent of the amount so invested. You have to invest the total net consideration price. If the total net consideration, let's say, is 20 crore, you invest 20 crore, you get full exemption of the capital gain earned on that 20 crore. But if you had invested only 12 crore, then exemption was capital gain multiplied by 12 crore divided by 20 crore, that is proportional amount. Now they have said the maximum benefit you will get for investment of net consideration price will be limited to 10 crore. 10 करोड़ से ऊपर जितना भी लगा लीजिए उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सपोज आपने 20 करोड़ का बेचा है और 10 करोड़ 20 ही लगा दिया तो भी एग्जेम्पशन 10/20 मिलेगी. 10/20 of the capital gain. पहले मिलती थी 20/20 of the capital gain. Now, क्योंकि net consideration is more than 10 crore, you will get benefit only to the extent of 10 crore. और बाकी ये भी बताया, if you could not invest that money before the due date of return, you had to invest in capital gain scheme. Now the amount to be invested in capital gain scheme should not be more than 10 crore because you are not going to get benefit of beyond 10 crore. So that is also the point which had to be noted for all of you. अब दूसरा point ये होता था, मैं आपको चीज बताऊं कि there are so many changes which have taken place. मेरे पास टाइम आज नहीं इतनी बात करने का, मैं तो अभी शुरू ही किया. तो 114 amendments हैं सर, 114 amendments हैं. And I tell you, finance bill is of 200 pages or more than 300 pages और वो भी है. I'll have to look into that. लेकिन फिर भी जो major point मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें ये भी हैं कि please note that when you used to make a gift to non-resident exceeding 50,000, if he was not a relative, that was taxable. अब लोगों ने क्या करा, अब एक स्टेटस ले लिया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट गिफ्ट ले रहा था और वो कहता था इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज नॉन रेजिडेंट. So now they have changed section 9(1) clause 6 and also the 56 rule that even if the gift is made outside India to a not ordinary resident, and if it exceeds 50,000 rupees, and if it is not covered in India, if he is not related person, the entire amount will be taxable in the hands of the recipient, that is whether resident, non-resident or not ordinary resident. ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया so that you may not be mistaken necessarily. और अब एक और अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया सर. अग्निवीर आपको पता है कि अग्निवीर वाला जो सिस्टम आया है, so what have they said, like national pension scheme, even Agniveer will also contribute to Agniveer corpus fund. Agniveer corpus fund. Even the employer will also contribute to Agniveer corpus fund. ये दोनों को आप कंट्रीब्यूट करेंगे. जब ये कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये पहले तो इनकम मान ली जाएगी अग्निवीर की, बट देन ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCH. एक नया सेक्शन डाला है 180 CCH, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन उसको मिलेगा अगर न्यू स्कीम में जा रहा है. ओल्ड स्कीम में तो दोनों मिलेंगे, न्यू स्कीम में जाएगा तो वो मिल जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर. और जब भी अग्निवीर कॉर्पस फंड से पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा अग्निवीर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा. दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट in his hands. A new scheme only for Agniveer, not for others. I just want to tell you, कभी ये सोचे कि बाकियों के लिए ये नया अग्निवीर का फंड आया और उन्होंने उनको बेनिफिट दिया है. So that was also the point which I wanted to tell you. And there are certain mistakes which were there. Lot of mistakes were there in the in the income tax. There were a lot of confusion which were there.
they have rectified those confusion. And let me tell you, they gradually, the things are going to improve. But at the same time, एक और प्रोफेशनल के लिए बेनिफिट दिखा दूं या बिजनेसमैन के लिए दिखा दूं, प्रोफेशनल एक प्रेजेंटिव इनकम है हमारे यहाँ. You can presume your income to be 8% or 6% if your total turnover do not exceed 2 crore. And in case of a professionals who are covered under 44AA, you can presume your income to be 50% provided your gross receipt does not exceed 50 lakh. ये जो 50 lakh की लिमिट है और 2 crore की लिमिट है, that has been increased to 3 crore provided, let me tell you, why it has been provided your gross receipt, amount received by you as a businessman or as professional should be by check, by account pay check, but by any more, not in cash. Maximum allowed is 5% in cash. मतलब 75% अगर है तो 5% और 75% if your receipt is 70%, 5%. If your turnover is 3 crore, maximum is 5%, 15. और लिखा है cash means that if the payment is received by way of a check or a bank draft, which is not an account pay check or account pay draft, then it will be treated as if it is received in cash. As if it is received in cash. So that point has been made clear also कि 5% तक कैश रिसीव हो सकती है. वो वाला कैश की रिसीव नहीं कर रहा जो आप जमा ही नहीं करते, वो उसकी बात नहीं कर रहा. जो कैश रिसीट की आप रिसीट दे रहे हैं, but that should not exceed 5%. Then you can go up to 3 crore and make it 6% or 8%. And if you are under professionals, you can take your income to be 50% up to 75 lakh instead of. So this is also an advantage which has been given by taking a presumptive income scheme. आप उसको भी करके इसका benefit ले सकते हैं. Well, I'm trying. Sir, there are many other provisions, but मेरी problem ये है, I have another program lined up for institute and I have not read much anything. अभी तो मैं देख रहा था, जोड़ रहा था, तो आपका कॉल आ गया. So thank you very much. Sorry sir, ब्रजेश जी, I cannot continue for long. ब्रजेश अग्रवाल जी को भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, अब अग्रवाल जी को भी, मनोज जी भी को भी, और मैम भी तो सामने है मेरे. So thank you very much for the patience hearing, and I am really sorry I can't continue. अतुल जी, thank you very much, please. Sir, thank you sir, thank you. सर एक दो क्वेश्चन थे छोटे छोटे जो मेंबर्स ने. बोलिए. हाँ बस छोटा छोटा सर. एक क्वेश्चन है सर, दैट दी सर एक मिनट. Amendment in 43B is also applicable to those where assessee himself is MSME. MSME ने MSME को पेमेंट करनी है तब भी applicable है 43B क्वेश्चन. देखिए MSME आप पेमेंट देने वाले की बात हो रही है. देने वाला कौन है वो वाला कहीं नहीं रखा हुआ अकॉर्डिंग टू मी. मैं एमएसएमई एक्ट जानता नहीं, मैं प्लीज मीडियम मैं अमेरिका एक्ट पूरा जानता नहीं. मुझे तो इनकम टैक्स में लिखा सेक्शन 15 में जो भी लिखा है, that will be allowed only when the payment is made if there is an agreement within 45 days and if there is no agreement within 15 days. But I'm sorry, I'm not very sure, but I don't think it is anywhere written that it should be only for person other than MSME. फिर भी मैं चेकअप करूं. बिल्कुल ठीक है सर. सर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साहिल जी का. इफ द कैपिटल गेन इज 20 करोड़ एंड ही इन्वेस्टेड 15 crore only in the 54F. 15 by 20, 10 by 20. सर आप बहुत सुनिए, आपका टोटल कंसिडरेशन तो 20 है. आपको एग्जेम्पशन मिलनी है 10 करोड़ की. अगर आप 10 करोड़ की लेते हैं तो कंसिडरेशन तो डिवाइड तो 20 से करते हैं. आप योर नेट कंसिडरेशन प्राइस तो 20 है. यू इन्वेस्ट 15 और यू इन्वेस्ट 10. आई एम गिविंग यू 10 ओनली. आई एम नॉट गिविंग यू मोर देन 10. सो 10 को 20 से ही डिवाइड करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट कंसिडरेशन प्राइस को. उन्होंने कह दिया दैट यू डू इन्वेस्ट ओनली 10 बट व्हाट इज योर कंसिडरेशन प्राइस 20. सो यू विल गेट ओनली 50% देयर. यू विल गेट 50% ओनली देयर. सो 10 से ऊपर जो भी लगा के इग्नोर कर दीजिए. अगर 20 का 20 लगाते तो क्या होता? वो भी तो वही होता. बिल्कुल ठीक बात. सृष्टि. Thank you, Girish Ahuja sir. This is our blessing for giving us wonderful insights on the key takeaway for budget. Thank you so much, sir. Thank you, beta. Thank you. I told it I am leaving. I have to do a lot of other things. Thank you.
Thank you, please. Thank you so much, sir. Now I request Professor S.P. Agarwalji, professor in Delhi University and principal of Ramajan College, to share his view on the economic analysis of the Union Budget 2023. Thank you very much. First of all, let me thank TEXO for organizing this wonderful seminar where we have one direct tax expert who has already spoken. He is the best in the country, and you are going to hear from Atul Gupta ji on indirect tax. It is always very difficult to speak after Dr. Ahuja, but I will try my best to speak something on economic analysis of the budget. Friends, we have to look at the two things here. Number one, the economic survey which came yesterday and the budget which came today. The important parameter I would like to say here is that we have to dwell on 3-4 things here. Number one, the growth in the country, the future growth or the growth as Finance Minister said till 2047, because it's a budget, she says, is for 100th year of the country. That means so long-term perspective has been taken, because this is Amrit Kaul and this budget is Amrit Kaul budget. Now, another important aspect is the employment, the Rojgar, and third thing is the inflation and its impact on various categories of individuals, various categories of the people in the country, high net worth individuals, middle class, and the so-called farmers or poor class or small traders and every other individuals. Now, basically, as you know, the budget is an estimate or a kind of a income and expenditure statement which we project for next year. The better thing would have been that if we analyze what we have done in the last year, let us say we had a budget of last year, and then we analyze what we have achieved and what we have left, and this is what we are going to do now, and this is our projection. Of course, I mean, that is not being done in that way, but economic survey gives you some data on various things. Now, another very important thing is that COVID impact is over now. COVID impact, as economic survey says, COVID impact is over, and the growth which is estimated for 2022-23 is 7% and projected 6 to 6.8%. It can be somewhere 6.4, 6.5, or maybe more. It will depend. Even IMF has said that it will be around 6.1% for India. And another important thing is that there is a very bright spot about Indian economy, projected not only by the budget, but by the international agencies also. So it is, I can say, a growth-oriented budget. It is a growth-oriented budget. Now, but the impact which I was talking about on employment and the inflation, actually, all of you know that growth and inflation goes together. If growth increases, inflation also goes up. Now we have to balance. Now finance minister or the prime minister has to balance between the two. So that is very important. We all need to understand that if there is a higher growth, the inflation has to be high, but we have to manage both things together. Now, another important aspect here is that once we say that we are going to achieve a growth of 6%, 7%, or maybe 8% in times to come, the inflation has to be managed within the threshold limit of 5 to 6%. So that is the projection. But again, a difficult task is it will depend how, after 1 year is over, that how inflation has fared. But most probably the inflation will be within the limits prescribed by the government or by the RBI. Another important aspect is that, the impact on high class, we can say that it's not, of course, there are certain things which has been discussed by Dr. Ahuja, that what will be the impact of tax, but it really does not, rather it is favorable to them in terms of income tax, but there are certain other things which has been added like capital gains and other things. So that will definitely,
impact those people. But the main impact is on middle class. Now, middle class was expecting too much from the budget, but probably if you look at the overall situation, of course, the disposable income has gone is definitely go high because of the lower tax. But most of the people, salaried people, as Dr. Ahuja said, were taking a lot of exemptions. So those exemptions will go. So ultimately, we may end up with paying higher tax. Now, regarding the lower section, the challenge was that how to bring them beyond poverty line, because the larger population is below the poverty line. So how to bring them up? So a lot of things has been done in that area. That the investment in the infrastructure has increased tremendously. I mean, that has been projected by 33% increase, which amounting to almost 10 lakh crore. Now, which is a very, very positive step in the in the budget. But we will have to see that whether this will increase to that level. But definitely, you have seen the trend in the last year. The investment in the infrastructure has been tremendous by the government. So this is a kind of a step which will generate employment among these people. Another important thing is that budget has not said much about the education and health sector. Of course, certain steps has been taken, minor steps. My viewpoint as a economist, I can say, or as a commerce, I can say that to lift these poor sections of the society, education and health are the key. So we have to go a long way in spending money on these two sectors in order to bring these people beyond the poverty line. So that not much has been done in that direction, because the reference has been given. There are certain things in the education sector, like some schools under Eklavya, or some teachers training emphasis has been given. So except that, there is hardly anything on health sector. There was they said that they will be opening up some nursing schools, about 100 of nursing schools will be opened. But they have emphasized another important thing on skill education, which is a very good step for this section of the society. There will be 100 skill centers all over the country. Of course, we have not seen that impact of those skill centers in the last few years, which was launched by the government. But still, I'm sure that this will have a good impact on this section of the society. Another important thing is, the emphasis in the budget is on sustainable economic development. And the important factor was how the government will deal the agriculture sector, because that is another important area in which the budget should have, highlighted, but they have highlighted, but more is expected from the government, as said by certain economists. But there is always a limitation, because we have limited resources, government has limited resources, and we cannot do beyond those resources. So agriculture accelerator fund has been created. Then they have emphasized on agriculture startup, which is a very good idea. And then they have said about the technology usage in agriculture, which is going to change our agriculture scenario. And they have also emphasized on, as Prime Minister said, being a international year of millets, they have sidelined 2,200 crores for millets and 20 lakh crores for agriculture. Of course, lot more can be done for the agriculture sector, but again, as I said, that we have limited resources. Government also has limited resources. So within that, I'm sure the agriculture will grow further, because agriculture is a bright sector in our country. Last year or last 2-3 years, we have been saved by the agriculture sector because of the COVID, but and there was hardly any growth in the manufacturing, but agriculture saved us. So agriculture should have been an emphasis. Similarly, they have talked about the computerization in agriculture sector, which is, I'm saying, use of artificial intelligence and technology, which is the key for also for this sector.
Now about industry, well, we have industry experts, so I'm sure the industry expert will talk about the industry, but mainly, the outlay in the capital sector will also help the industrial sector. Railway outlay is also huge, 2.4 lakh crores. Again, this is an infrastructure development. Then development of airports. They have said that 50 more new airports will come up. Government has emphasized a lot on green energy. Like they are making huge investment on green hydrogen, which is a bright future, because fossil fuels, they are draining our resources. Though if we can create these alternative sources of energy, probably country will be benefited in the long term. And another important thing in agriculture sector itself, that the budget said that 1 crore farmers will be trained on organic farming. Of course, its result will be known in next 5 years, but still it's a good step. Similarly, they have talked about the tourism sector. 50 more places will be developed and allocated funds for that sector. So I can say that budget is not, a populist budget. It's a growth or people-oriented budget. Another important thing which I would like to say, that in terms of, taxation as well as in terms of economic development, the government has done, probably a very good job within these resources. And also, when we will study in detail, as Dr. Ahuja said, there might be a lot of changes in the taxation and a lot of other things which are inside the budget, which we may not know immediately, but probably the budget, has impacted everyone. Budget has taken care of everyone, and I'm sure it's a futuristic and growth-oriented budget. So with this, once again, thanks to the organizers for having me. If you have any questions, I'm ready to take them. Thank you, Professor S.P. Agarwal, sir, for sharing your view and valuable input on the union budget. Now I request, except from industry, Mr. Brijesh Kumar Agarwalji, co-founder of IndiaMart and CA of Busy Business Accounting Software, to share his thought on the economic analysis of the budget 2023. Thank you everyone for having me over here. I think we've had great views from experts on taxation and economic perspective. What I will do in this conversation is to focus on specifically 2 broad areas that impact micro, small and mid-sized enterprises, because this is a segment that we really work very focused upon. So what are some of the signs and signals and specific provisions from the budget, which I think are very meaningful for all MSMEs in India, be it from the product industry, be it from the services industry. So the important point that the budget and the economic survey essentially have made, which I think is very, very significant for us to understand, is that India is moving in that direction where the per capita income over the next 3 to 4 years will start to hit anything between $3,500 to about $4,000 a year. Now, when we look at historically, all the countries which have seen dramatic improvement in overall consumption, and you have created large size businesses, you will see that that trend starts when the per capita income of a country enters into the zone of $3,500 to $4,000. And therefore, the current per capita income for this year is almost at about 2 lakhs, which is about $2,500. This in itself is a very significant jump. I think every single small size, mid-sized business today
who have growth as a key driver, who focus on, looking at opportunity to become large, I think this is the right time for us to start organizing ourselves and focus on growth, because there is a tailwind in terms of the per capita income and obviously the 7% GDP growth rate. Frankly, it comes to me as a surprise, wherein everybody pegged that this rate may go down to about 6.1% to 6.5%, but 7% is an excellent growth rate in turbulent times like these. So this is one big message that I really get as a positive for all the MSMEs. The other key element that we've seen from this government, and this has been true for the last multiple years now, is the amount of capex that the government is making on infrastructure. Right, defense also has now been added to it because with a lot of focus on doing indigenization or producing products for defense within India in itself. If you look at the overall capital allocation that has been done sector-wise, you will see that the top 4 or 5 sectors are all infrastructure related. Now, with that kind of capex moving in, we have seen that the private sector capex in India, that cycle hasn't yet taken off, which means that the government is taking up that mantle. And my sense is that over the next 1 or 2 years alone, the private sector will also start investing heavily in terms of capex. And when that starts to happen, it means one, higher growth rates for the country, higher per capita income for the people, as well as the kind of opportunities that come for the MSMEs, because eventually any large infrastructure project to be done, it will require material, it will require services, it will require a lot of things for it to get completed. And it is the MSMEs who will eventually become the beneficiary of doing that. And especially given, the geopolitical situation with China and a lot of focus therefore on doing strong within India, I think we are actually looking at one of the best decades, at least in my lifetime, I have not gone ahead and seen anything like that for all the MSMEs put together. People who are pragmatic, people who see positive, I think for them, the next 5-10 years could be the best growth story that they would have ever imagined for themselves. The third key message that I really saw from the budget is the emphasis on green growth. If you look at green growth, what therefore the government is prioritizing is every single sector where there is an element of focus on achieving green growth essentially will become priority. So whether, for example, it is setting up of, let's say, the battery storage capacity, production of hydrogen, right? All sectors that impact the environment, the sustainability, anything that focuses on renewable energy, all those sectors, and therefore MSMEs linked to those sectors essentially will again have a good tailwind that will push them in towards higher growth. Because when the government is actually spending money, when the government is prioritizing growth of those sectors, what it means is that the residual business which will come to the MSMEs will come to them automatically. There will be a lot of demand. We have to be ready to fulfill that demand and then obviously use that opportunity to grow in them. We've seen these kinds of revolution happening in telecom, right? In the 90s, when telecom sector started to get this tailwind push from the government, every single company associated with that sector had an opportunity to make it big. And we actually saw at least 10 or 12 companies that I know of who eventually went ahead and started doing turnovers of more than 1,000 crores as a result of that.
Those were companies that were unknown earlier. And therefore, with this focus on green growth, there are a lot of these newer sectors that emerge for us MSMEs to go and focus on and ensure that we are able to build a sizable business out of this. The fourth key message, and this is for the first time, I just hope that what has been said in the budget is actually followed through well, is clearly that there is one big positive step on actually solving a major problem for MSMEs, which is of getting their money back on time. Right. There have been enough number of announcements, policies that have been made in the past, but they have largely been ineffective. If the new announcement of no deductions being allowed if the payment to MSMEs are not done in time, if it actually gets implemented very, very well, this could actually drive a lot of, I would say, positive cash flows. It could reduce the number of delinquencies that we see in the MSME sector. And it can actually take out a big stress in the system that has been there for ages now. Right. Government obviously has done a lot of this one provision that has been announced this time in the budget. Again, as I said, if implemented well, this could actually be a big boon, whereby the MSME does not really have to worry about getting their money back in time. So therefore, their cash flow cycles would be much better. Their predictability of cash flows will be much better. And therefore, for them, to start focusing on growth rather than on collections becomes far more easier available there. Let me also go ahead and focus on two things which I think we as MSMEs should really be thinking about loudly, because it may impact us. In terms of our current way of working, it may impact us negatively. Number one, the government is becoming smarter with access to lots of data, and lots of data that can be triangulated from multiple sources. Right? In some senses, the government is actually becoming like a corporate entity that works upon data to drive growth of revenue for themselves. I think we've seen a lot of that happening, through GST already. My sense is that the government will have data on literally everything that you go ahead and do. So therefore, formalization of the way we operate our business, becoming compliant while we are trying to grow our business, the need for that is far more than ever, in my opinion now. We've also seen that companies who have been able to formalize themselves and move in sync with the market, they've actually been able to get much higher growth than the non-compliant, non-formalized entities, specifically in the times of COVID and immediately post that. So just to give you an example, when we look at some of, let's say, our customers, and we look at what was the turnover that they used to do pre-COVID and post-COVID, companies which were formalized, which had a good, decent system of compliance in place, their growth rates during COVID and immediately post-COVID was between 30% to 60%. Whereas companies who were not formalized, they actually degrew, which means business from those not formalized companies actually went to the formalized entities during that period. And I think this is something which is seen as a trend by us
every single time we go ahead and look around, meet our customers and get this data. The decade-old or century-old methodology which we adopted to grow our business or to make money in the business in the past, I don't think it is going to be relevant for a very, very long periods of time. The sooner we realize and align ourselves to it, the faster we will be on a growth path. I am not talking about any exceptions. Exceptions will always be there. You can look around and you can find 25 informal companies which are growing very well. But when you look at in terms of percentages, percentage-wise, companies that are formalizing are actually able to grow faster, and this is a peaceful growth that they really get in there. And therefore, I think with the government continuing its focus on aggregating data, triangulating that data from multiple sources and trying to build up one aggregated platform, I think that is something which will give more ammunition and more power to the government in the times to come. It is better that we align ourselves rather than fight over it. The second thing that we should really be looking at and focused upon from the budget perspective is the government's focus on bringing the cost of logistics down from about 15% to less than 5%. I think that in itself has been a tremendous effort being put in a short span of time. We are invested in another company that does some work on aggregating this data for the government. Right from conceptualization of this idea to its implementation, government did that in 10 months time period. So the overall system which is now available for commercial utilization, whereby you can track data on the basis of FASTag, on the basis of different carriers, different modes, that has been aggregated and pooled together in less than 1 year's time. So what it means is that the pace at which digitization of this data is happening and the quality of the infrastructure which is used at the back end, which allows different entities to access that data using an API microservices framework, I think that is going to bring in incredible amount of changes. Supply chain costs overall for the country over the next 3 to 4 years will start to come down dramatically. So if there are businesses which are built on the basis of, let's say, localization, that, if I set up a factory in an area, and I get a 100-kilometer radius area that I can serve, that 100-kilometer area may not necessarily remain valid for you, because if the logistics costs get cut, people may start sending those products from 200 kilometers away, and yet pricing wise, it would start to make sense in that market. So any form of, this kind of a protected environment that have been the basis of building up business by the MSMEs, specifically with respect to supply chain, I think that is again something that will come under severe stress because of these developments that are going to happen here. So overall, if I were to summarize this, there is a lot of positive stimulus which is going to come to MSMEs, which if they want to use can act as a tailwind for their growth. It is better for us to align to those growth parameters rather than focus upon those, decade-old, century-old method of building business, making money out of that business. Because a lot of those protective environments are going to go away in the times to come because of digitization, because of the pace at which formalization is happening and the government is driving it, and the data availability. I think that is a very, very powerful tool
The government has tasted success with utilizing data to drive their revenues. They are not going to let it go at any cost from here. Right. So this is what I had from my side. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your wonderful insight and takeaway from the union budget. So we have few questions for the MSMEs. Yeah. So first we have, could the economy survey report is the foundation of the preparing the budget? I'm sorry, can you please come back again? Could the economy survey report is the foundation of the preparing the budget? So the government it would is. collect inputs from multiple sources. An economic survey that is published is a collection of all the information collected, and that information is obviously used in drafting the budget also. Yeah. Another question we have, the Shashank Chaudhary, he is asking how MSMEs are going to do capex with rising interest rates. So again, when you look at the opportunities that are available, and let's say, for example, you want to go ahead and do capex in a rising sector, like let's say battery storage itself, I think the current interest rates would still allow you to take advantage of doing that capex and getting in positive cash flows. However, if you really want to utilize, let's say, money at a higher interest rate for something which is on a decline, obviously it will not make much sense for you to borrow money at that cost. So another we have Nikita Agarwal. Moving to new tax regime would mean that government is trying to undermine the internet habit for the Indian. Shall I repeat, sir? Yes. Saving habits. Yeah. Yeah. Shall I repeat? Moving to new tax regime could means that government is trying to undermine the investment habits of the Indian. No, not investment habit. We cannot say that, but yes, they want to, they don't want to promote savings due to tax exemption. Yes, that is the objective, because they want to increase the consumption expenditure. That is to create demand. Thank you so much, Mr. Brijesh, sir, and SP Agarwal, sir. Now I invite CA Atul Kumar Gupta ji, past president of ICAI and well-known expert and eminent speaker on the indirect tax, to share his view on the analysis of Union Budget 2023. Atul sir, please come in over. Yeah, thank you, Srishti, and very good evening, dear friends. In absentia, Dr. Girish Ahuja ji. Right now we have with us the Professor SP Agarwal ji, who is the principal of Ramanujam College, Delhi University, and Brijesh ji, as being rightly introduced, the co-founder of the India Mart and the CEO of the Busy Accounting Solutions. Manoj ji, the CEO of the Texo, and all the other colleagues. At the outset, thanks to all of you for giving me this opportunity to come and share some of my thoughts about the budget changes, the Finance Bill 2022 changes related to the indirect taxes. Friends, there are these 16-17 changes which we witness in this particular budget, as rightly mentioned by one of my friends on some other occasion, कि indirect tax का budget तो हर महीने ही आता है, क्योंकि you are aware that we have the council meetings and lot of changes are getting implemented through the GST council meeting, and only changes which require the amendment in the act, they are being brought in through the finance bill, whether it relates to the council meeting or otherwise. तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर कोई 48 GST council meeting में decision भी हुआ, and if that decision required amendment in the law, then only act, then only it will come to the finance bill, otherwise it will be simply notified and get it implemented. So friends, there are around 15-16 changes are there which are related to the amendment in the act of the CGST versus vis-a-vis the IGST act. The first change जो है वो हमारा है कंपोजिशन लेवी को लेके, और कंपोजिशन लेवी के जो हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको लेके. आप सभी को पता है कि कंपोजिशन स्कीम में जो लोग व्यक्ति होते हैं वो लोग जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू
जो है वो अपनी गुड्स को बेच नहीं सकते हैं। ये भी आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और फिर 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये अनाउंस किया कि हम लोग जो है वो कंपोजिशन डीलर को भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंटरस्टेट सप्लाई करने का राइट जो है वो देने वाले हैं। ओरिजिनल डेट जो था वो 1 जनवरी था, जिसको बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया। अब जो सेक्शन 10 के अंदर जो है वो उसके लिए नेसेसरी प्रोविजन इंसर्ट कर दिए गए हैं कि अब जो है वो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और आप सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहते हैं, मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं जो सप्लाई ऑफ सर्विस करना चाहते हैं, अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में है तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी डील कर पाएंगे। ऐसा फैसिलिटेशन जो है वो इनबिल्ट कर दिया गया है सेक्शन 10 के अंदर। यस, उसकी जो डेट अनाउंस है वो 1 अक्टूबर है, वो 1 अक्टूबर से ही एप्लीकेबल होगा। ये बात हम सब लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। जो दूसरी अमेंडमेंट है वो प्रैक्टिकली एक क्लैरिफिकेटरी नेचर की है। आप लोगों को पता है कि अगर सपोज कीजिए कि मेरे को 180 दिन में पेमेंट, तो आपको पता है कि अगर मैंने कोई क्रेडिट लिया तो उस क्रेडिट को मुझे जो, जैसे आपने अभी देखा कि एमएसएमई एक्ट में 45 डेज में पेमेंट करना है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो सप्लायर है मेरा, अगर वो एमएसएमई सेक्टर में नहीं भी है तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि आपको इनवॉइस लेने के बाद, तो लेट अस से जनवरी इनवॉइस है 1 जनवरी का, 15 मार्च को मेरे को वो इनवॉइस मिला, 20 अप्रैल को मैंने उसका क्रेडिट लिया, पर मुझे उसका पेमेंट करना है 180 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि 1 जनवरी से। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे लॉ में जो लिखा हुआ था, लॉ में मुझे लिखा हुआ था कि उसकी जो आउटपुट लायबिलिटी है, अगर वो 180 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, उसकी आउटपुट लायबिलिटी में इंक्रीज कर देगा उसका जो टैक्स का वैल्यू है। तो लेट अस से मैंने 1 लाख रुपए के ऊपर 18,000 रुपए का क्रेडिट लिया और वो मैं 180 दिन में पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो मुझे 18,000 रुपए मेरी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। लेकिन क्या होता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम मैचिंग का कंसेप्ट खत्म हो चुका, तो उस वजह से जो है वो अब ये जो है वो अपने आप में सेल्फ असेसमेंट होगा रादर देन सिस्टम इसको ऐड करेगा, क्योंकि सिस्टम को तो नहीं पता 180 डेज हुए या नहीं हुए किसी पर्टिकुलर इनवॉइस को लेके। तो इसलिए इस फैसिलिटेशन को जो ऑटोमेशन में था उसको एक मैनुअल एक्सरसाइज की तरह किया गया कि आपको जो है वो खुद अपने आप में ये चेक करना है कि 180 डेज कंप्लीट हुए या नहीं हुए। अगर 180 डेज में उसका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप उस टैक्स को ना केवल पे करेंगे बल्कि इंटरेस्ट के साथ आप उस क्रेडिट को अपनी लायबिलिटी में रिवर्स, अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करके क्रेडिट को रिवर्स कर देंगे। इसके अलावा एक और चेंज है जो सेक्शन 16 के अंदर ही हुआ है, वो भी अगेन एक ग्रामेटिकल, मैं कहूंगा कि सिर्फ एक आपको कहते हैं कि एक जस्ट ऑप्टिक्स चेंज है। और वो क्या है कि हमारे पास जो थर्ड प्रोविजन था सेक्शन 16 का, उसमें एक वर्ड था मेड बाय हिम, द पेमेंट मेड बाय हिम। अब पेमेंट मेड बाय हिम को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है टू पेमेंट मेड टू द सप्लायर। अब इन दोनों वर्ड्स में कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि सपोज कीजिए मुझे 180 दिन में पेमेंट करनी है और मैंने मनोज कपूर जी को पेमेंट करनी है, लेकिन वही पेमेंट जो है वो मैंने एसपी अग्रवाल जी को भिजवा दी कि आप इनको पेमेंट कर दीजिएगा। तो देखा जाए तो पेमेंट मेड बाय हिम हो गया, मैंने तो पेमेंट कर दी लेकिन मनोज जी के पास पेमेंट पहुंची नहीं। तो अल्टीमेटली इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिस्प्यूट्स हुए, जजमेंट अपने जो है वो लिटिगेशन था इस बात का क्लियर करने के लिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट जो है वो मेड बाय हिम हो गया तो अतुल गुप्ता ने पेमेंट कर दिया, मैटर ओवर। नो, द पेमेंट शुड बी मेड टू द सप्लायर। जो मनोज कपूर जी को जब तक अगर पेमेंट नहीं मिलती है 180 डेज में, तब तक जो है वो मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा, क्रेडिट मेरा कंटिन्यू नहीं रहेगा, आई हैव टू रिवर्स दी क्रेडिट। तो ये हमारा जो है वो दूसरा बड़ा अमेंडमेंट था जिसके अंदर 2 फर्दर अमेंडमेंट थे, वो मैंने आपको बताए। फ्रेंड्स, जो तीसरी चेंजेस है वो भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 हम लोग पहले से उसको करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हर बार जब भी कोई प्रोग्राम करता हूं तो उस टॉपिक को बड़ा अच्छे से वो करता हूं, डिस्कस करता हूं, और वो है हमारा रेशियो एनालिसिस। मतलब मैं अगर टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों तरह की सप्लाई में डील करता हूं तो मुझे सेक्शन 17(2) और 17(3) मुझे डील करने होते हैं और मुझे एक रेशियो निकालना होता है मेरी टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड का, और उस रेशियो में मुझे क्रेडिट लेना होता है। मैं क्या बात कह रहा हूं, सपोज टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है और 70 लाख टैक्सेबल है और 30 लाख एग्जम्प्टेड है, तो मुझे रेशियो निकालना है सेक्शन 17 के हिसाब से, सेक्शन 17(3) के हिसाब से, और वो रेशियो कितना आएगा 70/100। मतलब मुझे 70% टैक्सेबल है और मेरी 30 लाख रुपए एग्जम्प्टेड है, तो मुझे 70% क्रेडिट मिलेगा वट एवर द क्रेडिट इज अवेलेबल टू मी। से मेरे पास 40,000 का क्रेडिट है तो मुझे 28,000 रुपीज क्रेडिट मिलेगा। अब जो है जब ये कैलकुलेशन में कर रहा था तो उस कैलकुलेशन के अंदर जो है वो हमारे को बहुत सारी एक्टिविटीज को बताया गया कि आपको इनको भी एग्जाम सप्लाई मानना है। जैसे एग्जाम्पल की बात है कि कोई एडवोकेट है वो रिवर्स चार्ज में
उसने कोई सर्विस दी, आपने रिवर्स चार्ज में जमा कराया, तो वो एडवोकेट के लिए एग्जम्प्टेड सप्लाई है। ऐसे ही अगर मैं शेयर्स मार्केट में डील करता हूं तो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी के लिए 1% ऑफ द सेल वैल्यू को एग्जम्प्ट सप्लाई माना गया। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज बताई गई कि जिनको भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। अब उसी कैटेगरी के अंदर एक नई एक्टिविटी को भी जोड़ा जा रहा है, और वो एक्टिविटी क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आप जो है वो कोई वेयर हाउस गुड्स है जो कस्टम बॉन्ड से पहले वेयर हाउसिंग हुआ, उन गुड्स को आपने जो है वो कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस, तो एक हुआ कि आपने जो है वो कस्टम बैरियर से उसको कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा रहे हैं, उस क्लियरेंस से पहले अगर वो गुड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जाती है, तो मतलब क्लियरेंस होने से पहले अगर वो सेल कर ली जाती है, तो वो क्या हुआ, वो मेरी कस्टम बैरियर में आई नहीं, जिसको हम एक तरह से हाई सी सेल्स भी बोलते हैं कई बार। तो अगर वो गुड्स मेरी जो है वो अगर हाई सी सेल्स है, तो हाई सी सेल्स भी मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगी, और मुझे उस केस के अंदर जो है वो रेशियो एनालिसिस निकालते वक्त उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई जो है वो मुझे मानना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो क्रेडिट है वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो हम सब लोगों को नोट करना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो अगर मैं नहीं निकालता हूं सही, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा क्रेडिट ले लूंगा, और क्रेडिट अगर ज्यादा लिया तो बाद में मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ उस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने इस बात को नोट करना है, और ताकि हमारे पार्ट में कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की कोई गलती ना हो जाए। फ्रेंड्स, एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब लोगों ने नोट करनी है, और वो है सीएसआर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि मैं सीएसआर की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी टर्नओवर, आपकी नेटवर्थ इतनी है, आपका जो है वो टर्नओवर इतनी है, तो आपको 2% का सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है। अब जो मैंने सीएसआर एक्सपेंडिचर किया उस पर इनपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अपने आप में हमेशा एक लिटिगेटिव इशू है। मेरे पास सर्विस टैक्स से लेकर कुछ ऐसी जजमेंट है जिनमें क्रेडिट मिल जाएगा लिखा आता है, और कुछ ऐसी जजमेंट भी है जिनमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये भी लिखा हुआ है। एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी अभी रिसेंटली आई जिसमें बोला कि सीएसआर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर के ऊपर क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन अब इस बजट के अंदर जो है वो अभी इसके लिए नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। उन्होंने क्लियर किया है कि ब्लॉक क्रेडिट जो हमारा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है, उसके अंदर उन्होंने क्लियर किया कि ब्लॉक क्रेडिट की डेफिनेशन के अंदर सीएसआर एक्सपेंडिचर को भी डाला जा रहा है। मतलब जिस दिन हमारा ये नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको सीएसआर एक्सपेंडिचर पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आपको फूड एंड बिवरेजेस पे नहीं होता है, आपको मोटर व्हीकल पे नहीं होता है, वैसे ही सीएसआर एक्सपेंडिचर पे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग जो है वो ये है कि 1 जुलाई 17 से लेकर लेट अस से नोटिफिकेशन आया कल 2 जनवरी को, तो 2 फरवरी 2023 तक क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 से 2 फरवरी 2023 तक क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बोले कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था, हमेशा से क्रेडिट दिलाने का नहीं था, लेकिन अगर नोटिफिकेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज लॉ बना है कि आज क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसके पहले पीरियड का क्रेडिट मिलेगा। ऐसा हमारे पास हजारों जजमेंट के अंदर जो है वो अपील्ड हुआ है। तो इसलिए ऐसे केसेस जहां पर हमका आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जहां लिटिगेशन चल रही है, बड़ी केयरफुली आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ें और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अपने केस को आर्ग्यू करें। दैट विल हेल्प अ लॉट टू द एसएससी टू क्लैरिफाई कि मुझे टैक्स लगना है या नहीं लगना है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो मेरा सेक्शन 23 के अंदर है। सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 कहता है कि कुछ ऐसे एसएससीज हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 22 और 24 कहता था लेने की जरूरत है, तो अब जो है सेक्शन 23 को अमेंड करके एक फ्रेश सेक्शन 23 डाला गया है, जिसमें बोला गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सेक्शन 22 एंड 24 मीनिंग देयर बाय आप 22 और 24 में कुछ भी कहते रहें, अगर आप 23 में फॉल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उस कैटेगरी के अंदर जो है वो 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आप लोग नोट करें। सेक्शन 23 के हिसाब से एक व्यक्ति जिसकी प्योर एक्सक्लूसिवली वो इनकम है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है या एग्जम्प्ट है। तो एक हुआ कि मेरी इनकम जो है वो टोटल मान लीजिए सपोज कीजिए रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की इनकम 25 लाख रुपए है, 20 लाख से तो ऊपर हो गई, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? तो अगर मेरी एक्सक्लूसिवली केवल और केवल वही इनकम है जो एग्जम्प्टेड है जीएसटी के दायरे में या वो नॉन टैक्सेबल है, तो मुझे उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 23 में दोबारा क्लैरिफाई किया गया है। और साथ में क्या बताया गया है कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट है और उस एग्रीकल्चरिस्ट की कुछ इनकम ऐसी है जो सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड,
अगर वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहा है, उससे कुछ प्रोड्यूस पैदा होती है और केवल उसकी वही इनकम है, तो उस केस में एग्रीकल्चरिस्ट को भी जो है वो उस टू द एक्सटेंट ऑफ, तो वो पर्टिकुलर इनकम के लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी कोई और दूसरी इनकम है तो सर्टेनली वो उसको अपने आप में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये एक बार के लिए सेक्शन 23 के अंदर बताया गया। तो सेक्शन 22, 23, 24 में जब कॉन्ट्रेरी व्यू आता था, उसको क्लैरिफाई करने के लिए सेक्शन 23 को रीएश्योर किया गया कि सेक्शन 23 के हिसाब से आपको क्रेडिट लेने की, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है वो इसके बाद आपको पता है कि हम लोग को जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं हम सेक्शन 37 में। मैं आपको कई सारे अमेंडमेंट इकट्ठे करके बता रहा हूं अभी एक बार के लिए। सेक्शन 37 के अंदर हमें बताया गया है कि आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। जीएसटीआर 3 भी हम सेक्शन 39 में फाइल करते हैं। सेक्शन 44 के अंदर हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं और सेक्शन 52 के अंदर जो है वो हम टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं। हमारी रिटर्न लेट हो गई, जीएसटीआर 1 भरने में लेट हो गए, 3B फाइल करने में, एनुअल रिटर्न फाइल करने में या टीसीएस की रिटर्न फाइल करने में। तो आपने क्या करा कि आपने बाद में रिटर्न फाइल करी, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न फाइल करी। लेकिन अब एक नया अमेंडमेंट जो है वो इन चारों सेक्शनों में डाल दिया गया है और उसमें बता दिया गया है कि एक सनसेट क्लॉज होगी। मतलब आप जो है वो किसी भी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट हमें एक्सटेंड करती है ड्यू टू एनी रीजन, वो एक अलग विषय है, पर अदरवाइज 3 साल की एक सनसेट क्लॉज डाल दी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबल, फ्रॉम द डेट व्हेन रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड। तो अगर सपोज कीजिए कोई 31 दिसंबर 2022 को रिटर्न फाइल करना था, लेट अस से हम 21-22 की बात करते हैं एनुअल रिटर्न की, तो अगर 31 दिसंबर 2022 को वो रिटर्न फाइल करना था तो 31 दिसंबर 2025 के बाद आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। एक सनसेट क्लॉज ऐसे करके डाल दी गई है। तो ये जीएसटीआर 1 के लिए भी एप्लीकेबल है, 3B के लिए भी एप्लीकेबल है, एनुअल रिटर्न के लिए भी एप्लीकेबल है और टीसीएस से रिलेटेड रिटर्न के लिए भी ये अपने आप में एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगली कैटेगरी का चेंज है, मैं 9 नंबर चेंज में पहुंच गया हूं, जो इस कैटेगरी में, इस कड़ी में जो चेंजेस डिस्कस हो रहे हैं। जो 9वां चेंज है वो है हमारा रिफंड को लेके। तो अपने पास जो रिफंड हम लोग सेक्शन 54 के अंदर फाइल करते हैं, उसके अंदर जो है वो एक जो है वो हमारे पास एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ था, ऐसी एक वर्ब लैंग्वेज लिखी हुई थी कि आपका एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी प्रोविजनली एक्सेप्टेड। मतलब क्या था कि आपको प्रोविजनल रिफंड क्लेम देने की बात जो है वो सेक्शन में लिखी गई थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि 1 मिनट के लिए वो आउट ऑफ दी, वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ कभी। तो उस बात को, क्योंकि वो अपने आप में मैचिंग कंसेप्ट से अपने आप इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो आपको पता है लास्ट ईयर में हमने देखा था कि जहां पर 2A 2B का रिकंसिलेशन करने का एक अपने आप में कंपलसरी रिक्वायरमेंट था कि सिस्टम करेगा, आपको DA2 भरनी है, मतलब आपको परचेज रिटर्न फाइल करनी है, उन सेक्शन को लास्ट टाइम ईयर में डिलीट कर दिया गया था। पर्पस क्या था कि जब हमने परचेज रिटर्न को इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो वो लॉ में क्यों पड़ी रहे, तो उसको लॉ से ही डिलीट कर दिया गया। उसी तरीके से उससे रिलेटेड जितने भी चेंजेस थे अब उनको भी किया जा रहा है और उसी की सीरीज में सेक्शन 54 के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया है और ये लाइन को डिलीट कर दिया गया है कि आपका जो है वो एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी प्रोविजनली एक्सेप्टेड। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे को सेक्शन 56 के अंदर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं रिफंड फाइल किया और मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट के ऊपर झगड़े होते हैं। अभी भी रिसेंटली एक केस का हम लिटिगेशन फाइल कर दिए हुए हैं कि जो है वो 1 मिनट के लिए उससे रिलेटेड जो है वो उसके क्या मैनर्स होंगे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के, वो क्लैरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 56 के अंदर एक प्रोविजन इंसर्ट किया है और उस प्रोविजन के तहत एम्पावरमेंट ली है कि गवर्नमेंट अब रूल्स इंट्रोड्यूस करेगी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। तो जल्दी ही आपको वो रूल मिलेंगे जिसके अंदर अगर आपका रिफंड है और रिफंड पे इंटरेस्ट बनता है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी एक कैलकुलेशन जो है वो आपको अपने सेक्शन 56 के माध्यम से एक रूल के अंदर देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो खासकर ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जो आपके क्लाइंट होंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर या हमारे मित्र कोई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर सुन रहे हैं तो वो ध्यान से सुने, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो पेनल्टी का सेक्शन है। सेक्शन 122 में एक नई पेनल्टी जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर लगाने की बात की गई है। किन 3 केसेस में वो मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन है सेक्शन 122 सब सेक्शन 1B, वो इंसर्ट किया गया है और उस केस में उन्होंने बोला कि आपको जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 10,000 रुपया या अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। तो अगर मान लिया टैक्स का अमाउंट 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। इसलिए ध्यान से इस बात को सुने। 3 केसेस कौन से हैं जहां पर पेनल्टी लगेगी। अगर सपोज कीजिए मनोज अग्रवाल जी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, मनोज जी बुरा मत मानिएगा, मनोज अग्रवाल जी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और इन्होंने अगर मान लीजिए कोई गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया
जो एक यूआरडी से रिलेटेड है। तो मैं अगर मान लिया अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हूं और मैंने जो है वो मनोज जी के थ्रू उस गुड्स को या सर्विस को सप्लाई कर दिया, मैं अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हूं, तो ऐसे केस में मनोज जी को एक पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपने एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के सामान को बेचने का काम किया है। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर में केवल और केवल एक रजिस्टर्ड व्यक्ति ही सामान डील कर सकता है, इवन कंपोजिशन वाला भी डील नहीं कर सकता। कंपोजिशन वाले के लिए भी अभी नया रूल आया है, नया सेक्शन आया है, नया अमेंडमेंट आया है। तो अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का सामान बेचने का प्रयास किया तो उस केस के अंदर जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को इस तरीके से पेनल्टी लग जाएगी। जो दूसरी चीज है, आपको जो है वो कंपोजिशन स्कीम वाले को इंटरेस्ट रेट सप्लाई अलाउड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, उसको 1 अक्टूबर से अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर आपने वो आज 1 अक्टूबर से पहले ही कर दिया, मान लीजिए आपने अभी जो है वो फरवरी में कंपोजिशन डीलर वाले का सामान इंटरेस्ट रेट सप्लाई में करवा दिया बिना प्रोविजन के, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। और तीसरा जो है वो, अगर आपने अपनी रिटर्न जो है जीएसटीआर 8 जो होती है वो अगर आपने रॉन्ग फाइल करी आपने, तो उस केस में जो है वो आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी कितनी है मैं दोबारा बता रहा हूं, 10,000 रुपया और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। तो इसलिए बड़ी सावधानी से इस बात को समझ लें कि अगर ऐसी कोई गलती हो गई तो अपने को क्या होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर केवल उन्हीं व्यक्तियों से डील कर पाएंगे जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अवेलेबल है। साहब इसी तरीके से अपने पास एक सेक्शन 132 है, जिसके अंदर आपको पता है कि 2 तरह के हमारे ऑफेंस होते हैं, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्ट है 1 करोड़ से, इवेजन का इशू है, इवेजन है 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का, तो वो हमारा बेलेबल ऑफेंस है। और अगर वो 5 करोड़ से ऊपर का अमाउंट ऑफ इवेजन है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अभी जो है वो आपको याद होगा 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम इस लिमिट को बढ़ाएंगे, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया कि 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया जाएगा। तो अब जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोविजन को, क्योंकि एक्ट में अमेंडमेंट लाना था, तो आपको इस बजट के अंदर वो अमेंडमेंट देखने को मिलेगा 132 के अंदर, जिसके तहत 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की अनाउंसमेंट को इंप्लीमेंट किया गया है और बोल दिया गया है कि अब जो है वो 2 तरह के ऑफेंस वही रहेंगे, बेलेबल नॉन बेलेबल। और अगर आपका अमाउंट 2 करोड़ से कम का है तो कोई ऑफेंस, वो कॉग्निजेबल वाली बात नहीं है, उसके अंदर कोई अरेस्ट के प्रोविजन नहीं है। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है और 5 करोड़ तक का है तो वो बेलेबल है, और 5 करोड़ से ऊपर का है तो नॉन बेलेबल है। लेकिन इसमें एक राइडर है। इसमें एक राइडर क्या है कि अगर मान लीजिए फेक इनवॉइस की वजह से इवेजन है, अगर किसी ने फेक इनवॉइस इशू करी और उसकी वजह से इवेजन है, तो ओरिजिनल जो लिमिट थी 1 करोड़ की वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, फिर वही है पुरानी 1 करोड़ और 5 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर वाली। तो इसलिए ये अपने आप में एक वेलकम चेंज है, जहां पर किसी इंटरप्रिटेशनल इशू की वजह से अगर कोई आदमी को परेशानी होती है तो उस आदमी को इस तरीके से प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन से वो बाहर रह सकता है। इसी तरीके से कुछ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को लेकर सेक्शन 138 में अपने को अनाउंसमेंट की गई थी बजट के 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि उससे रिलेटेड हम कुछ अमेंडमेंट लेके आएंगे। वो अमेंडमेंट भी जो है वो अब अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसके अंदर अपने जो है वो कुछ ऑफेंसेस को कंपाउंड करने के लिए आपको जो है वो 25% टैक्स तक का जो है वो पेमेंट करने से वो ऑफेंस आपके कंपाउंड हो जाएंगे। तो सेक्शन 138 के अंदर जो है वो बहुत सारे अपने जो है वो ऑफेंसेस दिए गए हैं। आप उन ऑफेंसेस को एक बार के लिए बाद में हम लोग जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे सेक्शन 132 के अंदर ए से एफ, एच, आई और एल जो है वो हमारे कुछ ऑफेंसेस हैं जिनके लिए कंपाउंडिंग की जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। समय नहीं है तो मैं अदरवाइज वो सारे ऑफेंसेस आपको मैं अलग से बता भी देता। साहब इसके बाद हम लोग के पास कुछ और 2-3 अमेंडमेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सेक्शन 158A, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई मैं आपकी जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, आपने रिटर्न फाइल करी और वो रिटर्न फाइल जो आपने करी वो मैं किसी दूसरे रेगुलेटर को देना चाहता हूं, जिससे कि वो चेक करे कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है वो अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कल को आप बोलेंगे भाई साहब मेरी इंफॉर्मेशन आपने कैसे दे दी, तो उस एम्पावरमेंट के लिए कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं किसी दूसरे कॉमन पोर्टल पे शेयर कर सकता हूं फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नेंस, वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए सेक्शन 158 इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आने वाला समय में जैसे अग्रवाल साहब बता रहे थे या आहूजा साहब या ब्रजेश जी बता रहे थे, एक इकोसिस्टम, गवर्नेंस का इकोसिस्टम जो है वो कंट्री में जो है वो और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत डेटा शेयरिंग बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट, बिटवीन द वेरियस रेगुलेटर्स यू विल सी इन द लाइट ऑफ द डे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास 2 तरह की अब हम बात करते हैं हाई सी सेल्स की। सब फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा एक बार के लिए
ये अमेंडमेंट भी 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अनाउंस किया गया था कि हाई सी सेल्स टैक्सेबल नहीं होती है। कब से टैक्सेबल नहीं होती है? 2018 में, 2019 में इसका लिए एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो 1 फरवरी 2019 से बता दिया गया कि हाई सी सेल्स टैक्सेबल नहीं होती है। पर हाई सी सेल्स तो शुरू से ही टैक्सेबल नहीं होती है, इवन हमारी ओल्ड रिजीम में भी नहीं होती थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बोला गया कि नहीं भाई साहब, 1 फरवरी 19 की बात नहीं है, ये तो 1 जुलाई 17 से ही टैक्सेबल नहीं थी। ठीक है साहब, तो इसलिए जो है वो 1 जुलाई 17 से ही टैक्सेबल नहीं है। ये अनाउंस तो करा 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, लेकिन एक्ट में अमेंडमेंट करना है, इसलिए इस फाइनेंस बिल में ऐसा अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कि हाई सी सेल जो है वो 1 जुलाई 17 से ही टैक्सेबल नहीं थी। वो अपनी नाइदर विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर कोई बोले कि ओहो आपने ये अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव कर दिया, मुझे रिफंड चाहिए, तो उन्होंने साथ साथ ये भी लिख दिया कि हम रिफंड किसी का नहीं देंगे भाई साहब, हमने आपको बता दिया कि ये टैक्सेबल शुरू से नहीं थी, तो इसलिए कोई रिफंड के लिए कोई एलिजिबल नहीं होगा। ऐसा करके अपने को उस अमेंडमेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है साहब। इसके अलावा 2 बड़े छोटे छोटे चेंज है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस का जो है वो OIDR से रिलेटेड जो है वो और सेक्शन 2 ऑफ द IGST एक्ट में, और एक सेक्शन 12 के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है वो भी 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अनाउंस किया गया था कि अगर सपोज कीजिए कि 1 मिनट के लिए एक गुड्स है जो मनोज जी जो है वो इंडिया से सिंगापुर भेजना चाहते हैं, और मैं जो है वो मैं एक एयर ट्रेवल की सर्विस देता हूं, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता हूं, मैं भी इंडिया में ही अवेलेबल हूं। तो मैं भी इंडिया में हूं, मनोज जी भी इंडिया में, लेकिन गुड्स जो है वो इंडिया से बाहर जा रही हैं। तो नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई होता है डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स का होता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन को 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अनाउंस किया था। इस बजट में उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया और बता दिया गया है कि ऐसी एक्टिविटी के ऊपर डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो नेचुरली जो है वो उसका बाहर रहेगा, लेकिन ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि बायर जो सर्विस रिसिपिएंट है और प्रोवाइडर दोनों इंडिया में है, इसलिए ये एक्टिविटी जीएसटी के दायरे में आएगी और इसके ऊपर IGST एप्लीकेबल होगा, जिसके अंदर आपको जो आप कोड सिलेक्ट करेंगे वो 96 कोड सिलेक्ट करेंगे फॉरेन टेरिटरी का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट चेंज जो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड इस बजट में, इस फाइनेंस बिल 2022 में अनाउंस किया गया। तो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आई ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन there in the this amendment, this finance bill 2022 within the 30 minutes time allotted to me. And once again, thanks to the team Taxo, SP Agarwal Saab, and each one of my colleagues who attended this program and giving me this opportunity to share some of my thoughts. Thank you very much. एक क्वेश्चन है सर कि कैन आई रिपीट दी अमेंडमेंट इन सेक्शन 17(3)? तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, 17(3) में आप रेशो निकालते हैं और उस रेशो के लिए एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें हम लोग जो है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई में एक नई एक्टिविटी को डाल रहे हैं। तो अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ है, 17 लाख टैक्सेबल है, 30 लाख एग्जम्प्टेड है, तो मुझे रेशो मिलता है 70 का, मुझे 70% क्रेडिट मिलता है। अब उस 30 लाख की जो एग्जम्प्टेड एक्टिविटी है उसमें एक नई एक्टिविटी को डाला गया है, और वो एक्टिविटी जो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो उस एक्टिविटी को एग्जैक्टली जो हम बोलेंगे वो एक्टिविटी जो है वो है सप्लाई ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। अगर आप इंडिया में उसका अगर टेरिटोरियल वाटर आपको, अगर आप कस्टम बैरियर क्रॉस करने से पहले अगर वो गुड्स को सप्लाई कर देते हैं तो वो ऐसी गुड्स को आप जो है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई माना जाए रेशो एनालिसिस को, रेशो निकालने के लिए। ओवर टू यू सृष्टि। अग्रवाल साहब शायद आप कुछ कह रहे थे। हाँ, अतुल जी, there is one more question. Kindly further explain section 16 amendments. हाँ जी, from the Mr. Harsh Shah. Mr. Harsh Shah asking one question. Kindly further explain section 16 amendments. सेक्शन 16 की अमेंडमेंट, 1 मिनट। सेक्शन 16 से रिलेटेड अमेंडमेंट जो है वो हर्ष जी मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल ऑप्टिक्स है, सेरिमोनियल है। आप पहले भी वही कर रहे थे जो अभी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है कि सेक्शन 16 में आपको पता है कि मुझे अगर मैंने पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर नहीं दी तो मुझे उस क्रेडिट को रिवर्स करना है। ठीक है साहब,
वो क्या कह रहे थे कि आपकी लायबिलिटी में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, वो होता नहीं है क्योंकि उनको तो पता ही नहीं 180 दिन कब हो गए आपके बिलों के। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जो है वो इसकी अपनी कैलकुलेशन करेंगे और इसको अपनी लायबिलिटी में ऐड करेंगे। तो केवल और केवल सेरिमोनियल है, अमेंडमेंट कुछ नहीं है। आपको एक तरह से भूल जाइए कि कोई अमेंडमेंट भी है। केवल और केवल जो है वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले वो कह रहे थे पॉपुलेट होगा, पॉपुलेट नहीं होता है क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। और दूसरा क्या है, उन्होंने कहा था पेमेंट मेड बाय हिम, और दूसरा वर्ड की जगह गया पेमेंट मेड टू सप्लायर, इसको चेंज किया गया। तो पहले था मेड बाय हिम, अब हो गया टू दी पेमेंट मेड टू सप्लायर। मेड बाय हिम और पेमेंट टू दी सप्लायर में गैप आ सकता है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है कि मैंने एक्स को पेमेंट कर दी और एक्स ने वाई को करनी थी लेकिन वो पेमेंट गई नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जी मैंने तो पेमेंट कर दी है। ठीक है साहब। दूसरा तरीका क्या हो सकता है 1 मिनट के लिए कि हम लोग जो है वो 1 मिनट के लिए कोई बुक एंट्री करके, तो जैसे एग्जांपल की बात है तो अपने को लॉ क्या क्लियर कर रहा है कि मेड बाय हिम नहीं है, पेमेंट मेड टू दी सप्लायर है। अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं मिलती है 180 डेज में तो उस केस में आपको क्रेडिट रिवर्स करना है। आपने पेमेंट कर दी या नहीं कर दी इमैटेरियल है, सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई 180 डेज में, दैट्स द पॉइंट। ओवर टू यू सृष्टि। या Thank you, Atul sir, for sharing your views and key takeaway from the union budget. Now, on the behalf of Texo, I want to say thank you to all the participants for valuable time for this knowledgeable session. If you missed any part of today's session, then you can also watch the recording on our YouTube channel, Texo. Texo News app is also available to download on your Google Play Store to keep your updated on compliance and news and case laws on GST. Thank you for all the participants. मनोज जी आप कुछ कहना चाहें, कह रहे थे आप या अग्रवाल साहब कुछ? मैं सिर्फ कह रहा था सारे क्वेश्चन शायद हम नहीं कर पाए कवर, तो उनके बिकॉज रिकॉर्डिंग इज देयर, यू कैन सेंड रिप्लाईज टू देम। I think thank you to all participants. They give their valuable time for this knowledge sharing session. I also thanks to Atul ji and the SP Agarwal ji who stay with us till end. I think thank you very much. Thank you Manoj ji, thank you Atul ji, thank you everyone. very much. Thank you Manoj sir, thank you SP Agarwal sir, thank you Atul sir. Thank you Srishti.